to curb the menace of Naxalism. Like before we could start this movie देख के है? नहीं देखा होगा ये भी. कौन सा देखा? 2611 याद है? ठीक है. Start this answer like attempt this question. Take 5 to 8 minutes. Hint भी देना होगा. Security कम पैराडाइम. पैराडाइम्स ऑफ सिक्योरिटी डेवलपमेंट उसको लिखो. फ्रॉम सिक्योरिटी टू डेवलपमेंट टू ट्रस्ट गेनिंग शिप. And explain each and everything. What are the steps taken in security? What are the steps taken in development? What are the steps taken in, you know, trusteeship? तो थोड़ा पानी दे. हाँ पानी देता हूँ.
आप नहीं गए थे last? Done. जहां पे भी हो, टेक डाउन, टेक 2 minutes, कम टू कंक्लूजन.
चलो स्टॉप, विल टेक लास्ट 10 मिनट्स में लाइक विल ट्राई टू इवेल्युएट. ओके. सो कुछ रिजेंबल कर पाए? मूवी किस किसने देखा? ओनली 3? मूवी भी नहीं देखा जाता तो पढ़ाई क्या ही मतलब पढ़ाई में कुछ बोलूंगा तो वो भी नहीं करोगे. कुछ रिजेंबल कर पाए द challenges what we we saw. You would have seen more challenges लेकिन वो pertaining to मूवी होगा. would you can you recap and tell me कि क्या रिलेट किया आपने? तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, उनको एंट्री पे ही उनके माइंडसेट में ऐसा है कि पुलिस इज द होल गवर्नमेंट itself is not for us. Okay. They are completely against us and they want to exploit us for our land and place. For millions, set up on a few factories. Okay. Uh, those factories which were promising them about the things which would not be benefiting the residents of that place. Okay, डेवलपमेंट के नाम पे झाड़ू, वॉचमैन, वो सब नौकरी दिया जाएगा. ओके, देन यू कैन राइट दिस बट इन अ गुड टर्म्स, मतलब not by using this language, by using it in your own terms. You can, अगर नहीं भी समझ में आ रहा, if you are able to relate it to your रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से आप पढ़ रहे होगे, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हो. अगर उस टाइम पे नहीं आ रहा है तो मेक श्योर आप जहां से कुछ भी पढ़ रहे हो या कुछ देख रहे हो या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको बुकमार्क करके रखना अपने दिमाग में, ताकि यू कैन very hard to define terrorism, yet it is potential threat to our country. चार पांच ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताना. ओके देन, ओके देन, बट वो क्या कर रहे हैं वो लोग ताकि यू कैन कॉल देम एज टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? ओके देन, पीपल हु आर डूइंग जिनोसाइड, आर दे आल्सो कॉल्ड एज टेररिस्ट? Okay, right. Like, can you repeat that once again? To spread their ideology, तो टेरर एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं. ओके, ओके. ब्रीफ ब्रीफ मीनिंग, बट एनी प्रॉपर डेफिनेशन फ्रॉम एनी इंटरनेशनल फोरम और any statute? No need to worry about it because there is no proper definition for terrorism. No international organization have come up with the definition so called for the term terrorist or terrorism. We will see why is it so. Like we will see that in the later part of the class at the end of terrorism as a chapter. Okay, what is the actual challenge in defining term terrorist or terrorism? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखा था हम लोगों ने, राइट? आई टोल्ड यू दैट वी कांट कॉल देम एज टेररिस्ट, राइट? द मेजर चैलेंज in defining them is even we can call them also as a terrorist because to spread their ideology, like as he said, they use the terror things, फियर को दिमाग में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए जो भी बंदा आर्म्स एंड अम्युनिशंस और फियर को इन्फिल्ट्रेट, किसी को डराने के लिए आर्म्स एंड अम्युनिशंस का यूज करता है, अगर इनके डेफिनेशन से जाए तो एवरीवन आर कॉल्ड टेररिस्ट, राइट?
सो इवन दिस विल बी अ अम्ब्रेला टर्म में आ जाएगा टेररिज्म के इसमें. सो विल सी व्हाट इज टेररिज्म फर्स्ट. द वन हु supposed to, I'll dictate notes, don't worry, supposed to or likely to threaten the unity, security in terms of economic security also, social fabric, unity, diversity, fraternity, जितने भी बड़े वर्ड्स हैं सेक्युलर प्रियम्बल के, सब डाल देना. अगर उन सारे टर्म्स को कोई थ्रेटन करने का सोचता है बाय यूज ऑफ वायलेंस, that is called as terrorism. We have defined it in a UAPA Act 1960, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट. ये आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर लगाया जाता है और जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स के ऊपर भी लगाया जाता है. वेरी हार्शफुल एक्ट. एंड आफ्टर द 2004 and 2019 amendment, it has become even more dangerous. We'll see what are the amendments, what they have done. Overreaching powers, especially to the government. Before this, only जो सेसेशन ऑफ लैंड पूछ रहा है, इन शॉर्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. इन शॉर्ट देयर इज नो स्पेसिफिकली मेंशन्ड देयर इन द एक्ट. जो सेसेशन ऑफ लैंड के लिए पूछ रहा है, दोज विल बी टर्म्ड एज terrorism under UAPA. But after 2004 and after 2019 act amendment, उसके बाद से तो ये एक्ट इतना पावरफुल बना है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ओवर ब्रीचिंग पावर्स दे दिया गया है, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड नॉट आस्किंग परमिशन टू इंटरवीन इन दिस लॉ एंड ऑर्डर अफेयर्स ऑफ द स्टेट. लॉ एंड ऑर्डर का जो एजेंसी है पुलिस, जो स्टेट में हु टेक्स केयर ऑफ इट, उसको भी बाईपास करके सेंट्रल एजेंसीज आके बैठ जाते हैं. यू वुड हैव हर्ड ड्यूरिंग द इलेक्शंस स्पेशली कि ईडी आ गई है, सीबीआई आ गया है, आईबी आ गया है, ईडी, एंड नाउ एनआईए आफ्टर 2009, especially related to terrorism. एनआईए एपेक्स बॉडी, मनी लॉन्ड्रिंग ईडी, आईबी वैसे बैकग्राउंड में काम करता है, आरएनएडब्ल्यू बैकग्राउंड में काम करता है, बट दीज टू आर दी सीबीआई इन रिलेटेड टू एनी क्राइम्स. ये आपने अभी भी देखा होगा, लाइक ड्यूरिंग नॉट बीएमसी इलेक्शन, स्पेशली स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस. एक साल पहले महाराष्ट्र के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन है उनके घर पे जाके ईडी बैठ गई थी, राइट. पार्टी टूटा, आई डोंट वांट टू नेम देयर पार्टीज हियर. पार्टी टूटा. व्हाई इज इट सो? Central agencies are with the hand, like are in the power of central government, and these people, especially home minister, we had discussed this in the last class also. अगर आप स्टेट होम मिनिस्टर देखते हो तो यूजुअली सीएम ही बनता है. यूजुअली वो पोर्टफोलियो सीएम के पास ही रखा जाता है. इफ नॉट, अगर किसी और के पास है तो समझ लो जिसके पास लाठी उसके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर. यू कैन डू एनीथिंग. अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे, लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आरसीबी स्टैम्पेड, हैव यू हर्ड ऑफ इट? द कमिश्नर ऑफ बैंगलोर वाज सस्पेंडेड only because that he is the head of the law and order agency in that jurisdiction. Rather किसको accountable लेना चाहिए. If you would be in that situation, and अगर मैं वो case study में आपको दूं, might be a probable case study for ethics. What would be your, like, if you guys don't know,
आरसीबी won after 18 years एंड वो 18 इयर्स का जो फ्रस्ट्रेशन था वो सेलिब्रेशन में बदला जब उन्होंने जीता. तो इन दैट मोर देन 15-20 people were died during this stampede, like around like peripheral of RCB stadium. What is it called? Chinnaswamy Stadium. So the next day, Commissioner of Bangalore was held accountable and he was suspended. What would you do in like if you would be in a position of Home Minister rather than suspending that person, or is going with that suspension order also? That's okay. But what would be your concern there? चलो, take this issue at the end of the class. We'll discuss. Ethics start नहीं हुआ ना? Okay. That is one of my forte. Got the definition of it? समझ में आया definition? Types. Even left wing extremism would also be one of the type. कौन से head में आ सकता है? Any idea about that? We're actually going ulta. Important ones are like we're discussing later. Ideological. Any idea about this? We have discussed in left wing extremism also. आपका राइट हो, इस बोर्ड का राइट ही होगा. चलो ठीक है. एनी आइडिया अबाउट राइटिस्ट आइडियोलॉजी एंड लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी? एटलीस्ट अभी तो पता चल जाना चाहिए. Which section of the ideology supports status quo? Private players. स्टेटस को सपोर्ट करता है. नॉट इंक्लूसिविटी. प्राइवेट प्लेयर्स. और यहाँ पे ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट. अगर आपको ये पता ही नहीं है तो हाउ वुड यू डिफाइन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देन? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का डेफिनेशन क्या लिखा फिर आपने? इट्स बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजी, राइट? मतलब एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. बट इफ यू डोंट नो व्हाट इज लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी देन वो कैसे चलेगा? डरावना लग रहा हूं आज? नो. ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, देन वायलेंट यूज ऑफ पावर, राइट? एनी इंडिया में तो है नहीं क्योंकि लाइक वी आर इन द सेंटर, बट वी कैन फाइंड एग्जांपल ऑफ दिस एज नक्सलिज्म. There's one more example for this, that is FARC of Argentina. No, 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 sorry. Ku Klux Klan of USA. Khan. Ku Klux Klan. Clan. Sorry. Yeah. Sorry. And this is FARC of Argentina. No idea about this, but just to give you examples, मैंने वो निकाला है. Okay. Second one, ethnocentric. Any
किसी का एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल? नो. You would hear this term ethnocentric, which means a person's belief is that belief कि उसका जो भी culture है is superior. They try to showcase that. Have you heard of this blue blood policy? हिस्ट्री में तो सुना होगा. Blue blood policy, white man's burden theory. What is that white man's burden theory? Educate and civilize Indians. उनको उन्हीं के लिए धरती पे लाया गया है क्योंकि वो इंडियंस को सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइज्ड बनाए. उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर being alive on this earth is that. This is the theory. There's one more called blue blood policy, which means, especially if I could give you example, Parsi, they're not like they don't use blue blood policy, but in one term, like or in one custom, endogamy marriages. They marry Parsi people within their community itself. That is one kind of blue blood policy. But there are lot many blue blood policy, especially related to Japan. वो लोग ज्यादा करते हैं. But I wanted to explain what is ethno terrorist or terrorism. Now can you define what is like what can be the best example for ethnocentric or ethno terrorism clan or group? Go through some pictures, go through some your life experiences. जो एथनिक के ऊपर बनाना चाहते हैं, एथनिसिटी. अभी बोलूंगा तो बोलोगे हाँ. खालिस्तान, they are not terrorist, but we have termed few of them as terrorist. पन्नू केस, जो कनाडा में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, that is also one of the example. नार्को, बॉयज को तो पता ही होगा ये. पैब्लो एस्कोबार. हाँ. नाउ कैन यू डिफाइन इट? अगर पैब्लो एस्कोबार देखा है तो आपने भी देखा है, सुना है. The name itself is saying कि नार्को टेररिज्म. Okay, like as we defined कि ideologically based कैसा होता है, leftist and rightist. Ethno on the terms of ethnic surveillance, like ethnic survivability के लिए वो terrorism adopt करती. But what about narco terrorism? Like if you have given me example Colombian, going through Miami route. Miami में ज्यादा बेचा जाता था because Miami is known as Miami and New York is known as party places in US. Then what would be the best definition that would suit here? In short, drug trafficking. पैब्लो एस्कोबार मत देखने मत बैठ जाना. बहुत बड़ा सीरीज है, 3-4 दिन लग जाएगा एक टर्म सीखने के लिए. क्या समझ में आया? ड्रग ट्रैफिकिंग करता था, उससे उसकी वजह से उसको क्या मिला? पैसा. पैसा मतलब इकोनॉमी. ई इज इक्वल टू ई. इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर. अगर इकोनॉमी है तो एम्पायर है. इकोनॉमी है तो पॉलिटिकल सिस्टम आप रूल कर सकते हो. दिस इज व्हाट वी आर स्केयर्ड ऑफ फॉर so and so party to come into BMC. I didn't tell that.
आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई डिडंट टेल दैट, नहीं तो कल मेरे घर पे ईडी आके बैठेगी. ओके, सी, थ्रू दिस ही गॉट बल्क ऑफ मनी. लाइक देर इज अ सर्वे दैट उसका एक साल का जो कमाई है वो अराउंड 15 करोड़ सिर्फ चूहे खा जाते थे. मतलब 15 करोड़ उसका जितना भी कमाई होगा, आई डोंट नो, लेकिन एक साल का जो 15 करोड़ का इनकम है उसका, पार्ट ऑफ दैट टोटल इनकम, वो चूहे खा जाते थे. ये उसका सर्वे. एंड देर आर लॉट ऑफ उसके मूवीज में भी बताया कि उसकी बेटी को जब ठंड लग रहा था तो जला दिया उसने कितने करोड़. तो उतना तो पैसा था उसके पास. एक फ्लाइट, सिर्फ फ्लाइट में पैसा भर के आता था. पैसा. हम्म. जो पैसा रबर बैंड और टेप मारते हैं, उसके ऊपर 1.5 या 2 करोड़ खर्चा होता था साल का. उतना तो पैसा था. तो विद दिस ड्रग ट्रैफिकिंग ही गॉट विद द इंटेंशन ऑफ कंट्रोलिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज. ये सब आप नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट इट इन सम गुड टर्म्स. यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ पैब्लो एस्कोबार, बट राइट इट इन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, ताकि समझ में आने तो एग्जामिनर लगेगा कि एक, मतलब जो कैंडिडेट का खुद करेक्शन कर रहा हूँ वो कहीं ना पेडलर हो जाए. ओके. रिलीजियस टेररिस्ट और टेररिज्म, टू अपलिफ्ट द वैल्यूज ऑफ देयर, और टू पुट फॉरवर्ड और प्रोफेस, प्रोपोगेट देयर रिलीजियस आइडियोलॉजीज. एग्जाम्पल. बाकी कुछ मत लिखना, सिर्फ इतना ही लिख. देर इज अ like reason also, but write only ISIS as part of your syllabus or as part of your examination. Quote only ISIS, don't quote any other thing for this type of. बाकी हम लोग examples you can write it in something other way around, but don't write it in the types of terrorism में कोई दूसरा मत लिखना. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आई वुड टेल के डिफाइन करता हूं, आप एग्जांपल देना मुझे. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आर दोस काइंड ऑफ स्टेट्स which propagate उनके फॉरेन पॉलिसी में टेररिज्म और देयर आइडियोलॉजी अडॉप्ट करते हैं. लाइक व्हाट इज आवर फॉरेन पॉलिसी. G20 मीटिंग में वी हैव कोटेड आल्सो वसुदैव कुटुंबकम. याद रखना, ये शायद आपको पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स में. राइट डाउन दैट वसुदैव कुटुंबकम. ऐसा ही सेम एग्जांपल आया था वंदे मातरम या कुछ तो था वर्ड. Some prime minister has defined it and did like they asked in the prelims कि कौन से उपनिषद या कौन से वेद से लिया गया है. So as you have, our prime minister has defined it vasudeva kutumbakam, go for it, research के कौन से scripture से लिया गया है. And that might be a probable question also, even if not in UPSC, in any exam this can be a probable question. And there is a program called vasudeva kutumbakam ki or, go and watch it. There is a debates regarding geopolitics. If you are practicing law, there is a stimulator courtroom. There is a Nalanda Wad room, August Kranti मैदान में. It's a free initiative by government of India. बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आने वाले हैं. Like I visited yesterday. Try to visit it. It's in August Kranti मैदान. Okay. Vasudeva Kutumbakam Cure. Like if you want to register that, like go for Book My Show. It's a free initiative. Do visit that once again. Okay. State sponsored terrorism, like as their foreign policy, principle, they adopt terrorist activities. Example, ISI.
आईएसआई क्या है? पाकिस्तान का एक यू नो खुफिया एजेंसी। बट व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ग्रुप। लाइक जैसे काउंटर पार्ट में हमारा क्या है? चलो अच्छा है। वेरी गुड। कुछ तो पता है देश का। नहीं तो सिर्फ आईएसआई का ही पता होता। दे स्पॉन्सर लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन। मेक श्योर अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं है तो एटलीस्ट बैकग्राउंड वर्क करना इन तीनों के ऊपर। लाइक विल सी व्हाट इज भटकल मॉड्यूल एंड ऑल। आपको बैकग्राउंड पता होगा तो आप उनका जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, लाइक हाउ वी have adopted the security come development come trust paradigm in left wing extremism aspect, we have done in this also. अगर बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आप प्रॉब्लम नहीं लिखोगे तो सोल्यूशंस नहीं आएगा। तो मेक श्योर व्हाट एंड ऑल वी आर डिस्कसिंग हियर, देयर इज नो बैकग्राउंड ऑफ टेररिज्म हियर। बट इफ आई कुड टेल यू, अगर टेररिज्म पहला कहां पे हम लोगों ने देखा, रिनोसा कहाँ हुआ? यूरोप, बट एनी स्पेसिफिक प्लेस? What was the actual reason that Rhinozo happened? They they started to question the practices of the religion. Okay, why is it so? Actually, before that, they started asking themselves, what is the reason for a man to be in the world? Then they started asking questions to the scriptures, to the popes, कि ऐसे क्यों हैं? Then they started the scientific temper. They started to build scientific temper. Then they started arts, history, in the field of music, architecture. If you see that period, बहुत सारा inventions हुआ. Like I'm not here to tell about Renaissance. We saw this during the French Revolution. When did India see a revolutionary kind of activities for the first time? Revolutionary activity. HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये पता है ना? दीज वर revolutionaries. For Britishers, they were terrorists. For Indian, they were revolutionaries. Try to थोड़ा रिलेट करो अपने सब्जेक्ट को। अगर उन तीनों को किसी इसमें डाल सकते हो, लाइक इफ वी ऑल आर ब्रिटिश, इन कौन से टाइप्स में डाल सकते हो? हम्म। नाउ डोंट से मी दैट आई कांट बी अ ब्रिटिश एंड आई कांट कोट देम। आई नो, जस्ट फॉर द हाइपोथेटिकल थिंग, कौन से इसमें डाल सकते थे? ओके, राइट। एनी अदर? सुभाष चंद्र बोस। चलो, इन तीनों को तो सपोर्ट नहीं था किसी बाहर से, फ्यू ऑफ देम। बट देर इज एग्जाम्पल ऑफ सुभाष चंद्र बोस जहां पे he had taken the help of foreign countries also. सुभाष चंद्र बोस को कौन से इसमें डाल सकते हो आप? राइट। जस्ट टू मेक श्योर कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सही से दिमाग में जाए। मेक श्योर कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो आपको समझ में नहीं आ रहा, ट्राई टू मेक श्योर कि उसको कुछ एग्जाम्पल से रिलेट करो। आई हैव डन इन दैट
थियरी एस्पेक्ट ऑफ माई ऑप्शनल, जहां पे कोई भी सब्जेक्ट बॉर्न होने से पहले उसके पीछे एक थियरी होता है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटी का कोई भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, कोई भी सब्जेक्ट बॉर्न होने से पहले उसके पीछे एक थियरी होता है। विदाउट थियरी दैट सब्जेक्ट कांट बी इन एग्जिस्टेंस। सो आई मेड श्योर के ऑलमोस्ट 12 to 14 थियरीज हैं, और हर एक थियरी में तीन तीन चार चार थिंकर्स हैं। आई हैव मेड श्योर के मेरे सब फ्रेंड्स उसमें सब घुस जाए। मतलब लेस्ली वाइट, वन ऑफ माय फ्रेंड्स नेम, आई कि उसका कैरेक्टर मेरे दोस्त के साथ मिलता है। अगर वो आया तो आई कोट दैट। लिखते टाइम एक बार मैंने मेरे दोस्त का नाम भी लिख दिया था, उसको काट मतलब उसको निकाल के उसके बाद प्रॉपर ऑथर का नाम लिखा था मैंने। आई हैव डन दैट मच इंटेंसिफाइड ratta for my optional, because that optional needed that kind of preparation. Anthropology, high high returns in marks. Make sure आप भी ऐसा एक ऑप्शनल चूज करो फॉर 2 to 3 years। अप्लाई किया एग्जाम, यूपीएससी अप्लाई किया? क्यों? अप्लाई क्यों नहीं किया? आई वॉज जस्ट चेकिंग के नोटिफिकेशन फॉर्म पता है या नहीं। नोटिफिकेशन फॉर्म आया ही नहीं, पोस्टपोन हुआ है। एंड इट माइट बी वन ऑफ द रीजन के 5 ऑप्शंस यहाँ पे भी शायद फिट हो सकता है। इवन इन यूपीएससी ऑल्सो everyone are thinking about the fifth optional, because जब आप 4 ऑप्शनल रखते हो, what if you have not attempted? There might be some wrongdoings in post math of your एग्जामिनेशन। स्टेट पीसीएस में होता ही था। स्टेट पीसीएस अभी महाराष्ट्र पीसीएस ने भी निकाला है कि देयर विल बी अ फिफ्थ ऑप्शन, जहां पे इवन इफ यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट, यू विल एटलीस्ट ब्लैक आउट दैट, so that that will be not counted as your attempt, that will be taken as non-attempted one, that you don't know। बट आपको 100% 100 क्वेश्चन आपको मार्क करना ही है। सो देयर इज नो चीटिंग का कोई यही नहीं बनता वहां पर। सो यूपीएससी शायद वो सोच रहा होगा, या फिर देयर इज वन सेइंग दैट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी has accepted the civil service reforms, they might introduce in this see in this session, in coming session। शायद 2 साल का एक पीरियड दे सकते हैं आफ्टर लेटर देन, like there will be a deletion of your optional, introduction of 2 new papers। और सब पेपर में केस स्टडी होगा। जो 250 का है वो 300 हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स इन प्रीलिम्स ऑल्सो, पहले था ये, पहले बिफोर 2009, उससे पहले 2 ऑप्शनल थे। एक ऑप्शनल सीसैट नहीं था, जीएस था, और एक ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ता था आपके प्रीलिम्स में कि कौन से इसमें आप एमसीक्यूज लिखोगे। उसके बाद आया एथिक्स। एथिक्स भी एज एन प्रीलिम सब्जेक्ट था पहले। तो मेक श्योर कि वो इंट्रोडक्शन फिर से शायद हो सकता है। बी रेडी फॉर इट। आई डोंट नो लाइक क्या सोच रहे होंगे, फेज मैनर में करेंगे या क्या, बट मेक श्योर ये जो 2 साल 3 साल है, जो भी जितना भी आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, उसमें से आपका ऑप्शनल जो है, जो हाई इनकर मार्क्स दे सकता है आपको, वो चूज करो, कंप्लीट करो और निकल जाओ। उसके बाद जीएस इज लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए कॉमन हो जाएगा। क्योंकि आपका बैकग्राउंड शायद सोशियोलॉजी से हो सकता है, आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी होगा। ज्योग्राफी से हो सकता है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा। व्हाट अबाउट दोस पीपल जो इंजीनियरिंग करके, इंजीनियरिंग भी है ऑप्शनल, बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर साइंस, उसका तो कोई इंजीनियरिंग है नहीं सब्जेक्ट इन यूपीएससी। दे माइट गो फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, तो उनको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन मिल सकता है। सो फॉर दैट, like there is a think of there is a thought of deletion of optional। make sure you
क्लियर बिफोर दैट, अगर वो डिलीशन होता है तो उससे पहले ही कोई ऑप्शनल अच्छे से चूज करके मेक श्योर ह्यूमैनिटीज का ही कोई लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मत लेना, दैट इज वन काइंड ऑफ एक्सेप्शनल थिंग। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ऐसा कुछ ऑप्शनल लेना, एंथ्रोपोलॉजी, जो मार्क्स ज्यादा देता हो, नॉट पीएसआईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थिंकर्स में ही मर जाओगे पढ़ते पढ़ते। ओके, लोन वुल्फ वॉरियर्स, दिस इज वन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जहां पे लाइक वेरी इमर्जिंग। एनी आइडिया अबाउट इट? ओके, आपने जो 2611 वाला मूवी देखा या देखा है पहले, उसको अपने लाइक हु हैज रिक्रूटेड, he doesn't know that person, he knows the person who have just trained him, किसने पैसा दिया, किसने स्पॉन्सर करवाया, he doesn't know the head of the idea. In the same way, lone wolf warrior also, but एक स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट का हेल्प लेके टेररिज्म को अप्लाई करना इज वेरी इजी। दीज पीपल डोंट टेक द हेल्प ऑफ स्टेट, दे आर द लोन वॉरियर्स। अपने गूगल पे मतलब अपने सर्च इंजन पे खुद सर्च करते हैं, बिफोर दैट दे आर एक्चुअली they term them as mental patients because they seek recognition. The cycle goes as like this: some incident triggered them, that follows in their school, in friends, friend फ्रेंड बुलिंग करते हैं स्कूल में, कुछ टीचर्स या प्रोफेसर्स कुछ उसको ट्रिगर कर देते हैं उस मैटर से। इफ सपोज, hypothetical example, if a person practicing Islam, अगर कुछ उनके फ्रेंड्स ने कुछ बुली किया उस मैटर को रिलेटेड लेके, और कुछ प्रोफेसर्स ने कुछ किया, या फिर ही इज सीइंग डिस्क्रिमिनेशन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, और कहीं पे बैठा है कोई चाय की टपरी में बात कर रहा है, सो एंड सो गलत और नेगेटिव रिलेटेड टू इस्लाम एज ए रिलीजन, that triggered them to isolate from the society, and that isolation led them to get into online things, and वहां पे like minded people के साथ they started conversing things like, these are the things happening with me, we should be rectifying it, and those like minded peoples will guide them to do such an so called terrorism kind of things. He will just take the help of the idea and पूरा एग्जीक्यूशन वो खुद करेगा। इफ यू लाइक एग्जाम्पल, ब्रूसेल्स में पेडेस्ट्रियन के ऊपर कार ड्राइव कर दिया था। फ्रांस, नॉट फ्लाइट हाईजैक, नाइफ लेके ऑफिस में, मतलब अपने ही ऑफिस में जाके सब लोग को मार दिया, मतलब जितने लोग मिले उतने लोग को मारा। दिस वन काइंड ऑफ साइको प्रॉब्लम इन इन यूथ और इन सॉफ्ट टारगेट पीपल, जहां पे टारगेट किया जाता है, दे जस्ट गाइड देम, एंड दैट वन इंसिडेंट इफ दिस थिंग रिपीट्स इन बिटवीन, वो ट्रिगर ऐसे होता है कि लाइक दे टेक द हेल्प ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस or else these kind of activities. This is called lone wolf warriors. This might be a probable question. Try to make sure कि आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद गूगल सर्च करोगे व्हाट इज लोन वुल्फ वॉरियर्स। टेक टेक दिस डाउन एज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई विल बी गिविंग यू एटलीस्ट 2-3 टॉपिक्स जहां पे अपने घर पे जाके खुद सर्च करना क्या है वो।
Steps taken while, taking notes itself, we will discuss. Take down the definition of terrorism. GTI, Global Terrorism Index 2020. Global Terrorism Index 2020. It states that terrorism is not a straightforward concept. Terrorism is not a straightforward concept. For a state, for a state to term as terrorist might not be the same for another state. Okay, but we have defined it in UAPA, right? According to UAPA, terrorism is is whoever does any act with intent to with intent to threaten and likely to threaten unity, integrity, security, unity, integrity, security, economic security, and sovereignty of India with intent to with intent to or likely to or likely to strike terror strike terror in the people or any section of the society in India or in foreign land. This foreign land was after 2019 amendment. 2019 अमेंडमेंट से पहले ऐसा था कि जो भी इंडिया में प्लानिंग हो सकता है या लाइकली टू और सपोज टू स्ट्राइक टेरर, इट वाज जस्ट मेंशन्ड दैट, बट वी एडेड दैट फॉरेन कॉन्सेप्ट, फॉरेन लैंड कॉन्सेप्ट, after 2019. Okay, the next is various forms of terrorism. According to second ARC report, according to eighth report of the ARC, according to the eighth report of ARC, the following are the forms of terrorism. First one, ethnic
or ethno-nationalist terrorism, ethnic or ethno-nationalist terrorism. Explanation to that: deliberate violence, deliberate violence by a subnational group, by a subnational ethnic group, by a subnational ethnic group to advance its cause. In bracket, desire for a separate nation, separate unique identity, to advance its cause. In bracket, desire for a separate unique identity. Then, second one, religious terrorism. Terrorism, terrorist, sorry, terror, not terrorism, terrorist, partly or wholly motivated from religious ideals and consider them violence as their violence as their divine duty, as their divine duty or sacramental act. See, while discussing, the way of language is very sober. The way of language, what you write in your answers would be something of officer kind of thing. अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो रट्टा मार लेना, लेकिन लिखना ये वर्ड्स को, बिकॉज आप जो कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हो दैट माइट नॉट बी अप्रिशिएटेड. देयर इज समथिंग अ वोकैबुलरी फॉर ईच एंड एवरी पेपर ऑफ द जीएस. तो हर एक पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, गो थ्रू दैट एंड मेक श्योर उस सब्जेक्ट के जो उस पेपर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके वोकैबुलरी यूज करो. ओके. थर्ड वन, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म. आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म. Make the difference leftist and rightist, left ideology and right ideology. Differentiation बना लेना. Left side, violent overthrow of power, violent overthrow of power, in bracket status quo, status quo. Second one, उसी में pro communism, rightist ideology, pro status quo, pro capitalism. Fourth one, state sponsored terrorism. Countries that embraces countries that embraces terrorism as their countries that embraces
terrorism as their foreign policy tools. Example, Pakistan, Pakistan's ISI, ISI sponsoring LET, Lashkar-e-Taiba, JEM, Jaish-e-Mohammed, and IM. The major difference between Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and IM is ये ऊपर के जो लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद है, they have originated in the foreign land, and IM, Indian Mujahideen, is born here in India. Any idea about it? IM, Indian Mujahideen? No idea. Bhatkal. Have you heard of the place name called Bhatkal? No idea. कोस्टल एरिया में आता है, मैंगलोर के पास, स्पेशली फेमस फॉर कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, इंपोर्टेड आइटम्स. मणिपाल का नाम सुना है? मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड ऑल. ओके. मणिपाल इज इन मैंगलोर. मैंगलोर, उडुपी, उडुपी के बाद मणिपाल, मणिपाल के बाद मैंगलोर, एंड उसके बीच में आता है एक प्लेस नेम कॉल्ड भटकल. If someone would ask you who's the first businessman of the world, or the best businessman of the world, or if even in say in India, that would be a Kerala Muslim, Malbari people. अगर आप दुबई जाओगे कभी तो देखना, देर आर लॉट मेनी मलबारी पीपल देर, स्पेशली मलबारी मुस्लिम्स. यू माइट हैव हर्ड ऑफ जोया लुकास. अभी पर सम हाँ बोलोगे. जोया लुकास एंड especially Malabar diamonds, those all are from Kerala. And as this place is a conflicting place, here nearby Bhatkal, कासरगोड एंड, जैसे बेलगाम इशू है कर्नाटक और महाराष्ट्र का, वैसे देयर इज एन इशू बिटवीन कासरगोड, ऑफ कासरगोड, बिटवीन कर्नाटका एंड केरला, place name called Kasargod. And there's another conflict which is Hosur, between Karnataka and Tamil Nadu. But as this place is in the influx of, border of Karnataka and Kerala, so lot many like western coast is a natural harbor. अगर आप ईस्टर्न कोस्ट में देखोगे, हार्बर आपको ज्यादा मिलेगा नहीं. देयर विल बी एन इंस्टॉलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब नेवल शिप्स एंड ऑल. बट जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, दैट्स अ नेचुरल हार्बर. एग्जाम्पल बेस्ट इज JNPT, मुंद्रा, गुजरात, कच्छ, कारवार, मैंगलोर, कोच्चि. So these ports are known for their commercial, imports and exports. तो ये जो import हो रहे हैं, जो भी goods, especially contraband items, and especially FMCG goods. FMCG means fast moving consumer goods. Okay, those goods अगर आप बैंगलोर कलेक्टिवली भी देखोगे एज ए स्टेट, उतना इन्फ्लक्स नहीं होता होगा जितना भटकल में होता है. एंड दीज पीपल originated from there, especially two brothers, and they started Indian Mujahideen. And इनका like जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद the safe route was Nepal. Remember, Nepal is the safest route for any person whosoever does wrong things in respect of Indian society. Nepal is the exit route and Nepal is the entry route. नेपाल के अलावा कहीं आई डोंट थिंक कि देयर इज अ पोरस बॉर्डर. अगर आप म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर देखोगे, देयर आर लॉट मेनी CIBMS will go through that also.
कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे 5 लेयर्ड है. लाइक इवन इफ यू मिस 1 लेयर, after 4 layers you will be killed directly by laser guns. To influx from that security thing, it's not an easy task. And few technologies which which should not be declared on the public portal, government doesn't do that. And before any commission, like any idea about arms and ammunitions, जैसे जहां से हम लोग procure करते हैं, any one technology, like any one uh, arms and ammunitions that we have imported it. कौन सा? रशिया से टैंक नहीं, एंटी मिसाइल सिस्टम. इसराइल इज द बेस्ट. लाइक इसराइल एंड फ्रांस, मोर लाइक सबसे ज्यादा हमारा इंपोर्ट फ्रांस और इसराइल से ही होता है, स्पेशली फ्रांस फर्स्ट, सेकंड इसराइल. S-400 एज यू टोल्ड, ये हमारे पास इक्विपमेंट है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास. फॉर एनी अपडेशन, कुछ रिपेयर करना हो तो वी हैव टू कॉल देम ओनली. दे विल नॉट शेयर द टेक्नोलॉजी, दे विल नॉट शेयर के हाउ डज दैट वर्क, उसका टेक्नोलॉजी क्या है. बट देयर इज एन न्यू आइडिया कमिंग अप, जहां पे नाउ वी आर ट्राइंग टू बिकम अ डिफेंस एक्सपोर्टर. We are exporting that Ugram प्रलय मिसाइल. सी, अगर आपको ये नाम रखने मतलब याद रखने में ये आ रहा है ना डिफिकल्टी, मेक श्योर उसका मीनिंग क्या है. प्रलय कहाँ आता है? समंदर में आता है. बाल कौन उड़ा रहा है? प्रलय कहाँ आता है? राइट, दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल. आकाश मिसाइल, हैव यू हर्ड ऑफ इट? आकाश कहाँ पे? ऊपर. एयर टू एयर मिसाइल. So if you can remember in these terms, that would be good. As I was saying, we don't have this technology, like not this S-400. वैसे बहुत सारे हैं, जैसे रफेल, सुकोई. तो सुकोई तो हम लोग ने ऑलमोस्ट डीकमीशन भी कर दिया है, क्योंकि इट्स अ 1960s का टेक्नोलॉजी. सॉरी, मिग. सुकोई है अभी, सुकोई अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया था. So there are lot many technologies we are decommissioning it, and we are building it on our own. And which is the apex body building in building these kind of technologies or arms and ammunitions? DRDO. DRDO and HL also in related to space sector, in respected to missiles. There's one more thing. IISc also helps, Indian Institute of Science, which is in Bangalore. And now we have privatized also a part of it, जहां पे स्टार्टअप्स हो रहे हैं उसके उसके लिए. इफ यू कंपेयर अवर सिस्टम विथ यूएस सिस्टम, यूएस के प्राइवेट प्लेयर्स आर वेरी गुड इन दैट. यूएस का आप अगर आप इकोनॉमी देखोगे, यूएस इज नॉट बिल्ड बाय अमेरिकन, यूएस इज बिल्ड बाय आउटसाइडर पीपल. और हम लोग यहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि ये हमारा शहर है. पूरा कंट्री का कंट्री किसी और ने आके बसाया, एंड राइट नाउ देयर स्टेटस इज सुपर पावर. 35 नेशन से, 35 इंटरनेशनल अग्रीमेंट से बाहर निकल के आ गई यूएस इन लास्ट 4 days. 35 नेशनल इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, येट देयर इज नो साउंड. कोई बोला भी नहीं उसके ऊपर. लाइक यूएन, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, climate. Have you heard of UNESCO? What does it rely on? Education,
जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, दे लाइक दे स्पॉन्सर दैट, दे स्पॉन्सर दोज काइंड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, सो दैट वहां पे टूरिज्म ज्यादा है. नाउ हु विल स्पॉन्सर? नाउ हु विल स्पॉन्सर? सुपर इकोनॉमी कौन है? हम लोग फोर्थ नंबर पे आते हैं एज ऑफ प्रेजेंट डेटा एंड ऑल. वी कम ऑन, लाइक वी कम एट फोर्थ पोजिशन, एज हम लोगों ने पॉवर्टी भी एलिवेट कर दिया है, मतलब इरेडिकेट कर दिया है एज द गवर्नमेंट स्टेट्स. द नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर वुड बी चाइना. चाइना शायद स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन बट आई डोंट थिंक, बिकॉज वहां का सिस्टम इज अ कम्युनल पीपल, पीआरसी. आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल. मेक श्योर जो भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन रिगार्डिंग एनी पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्लाइमेट चेंज, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एनी एग्जाम्पल? आईपैक, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एज हम लोगों ने टीएफएफसी, एफसीआईएन, विच मीन्स फेक करेंसी इंडियन नोट्स, like we have established in Ministry of Home Affairs. We have almost created one new segment only, new department itself in Ministry of Home Affairs, as वो इंडिया और इंडिया के बाहर जितने भी फेक करेंसी के रिगार्डिंग हो रहा है उसको देखता है. फॉर दिस टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग होता ही टेरर फाइनेंसिंग के लिए. यू माइट नॉट बी द वन रीजन. जैसे आपको एक, आप बेटिंग खेलते होगे, लाइक बिफोर, नाउ दे हैव चेंज द टर्म आल्सो, फैंटेसी. खेला होगा ड्रीम इलेवन एंड ऑल, नो, विल नॉट गेट इनटू इट, बट इसका जो ओनर है इसका अमाउंट लेके टेरर फाइनेंसिंग करता होगा, एंड यू विल बी अ मिनिमल पार्ट ऑफ इट, जहां पे आप खुद अपना पैसा दे रहे हो कि अपने देश में आके ये सब चीजें करो. तो मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स, लाइक दिस, लाइक फ्यू थिंग्स माइट बी अ शॉकिंग थिंग फॉर यू कि कैसे वर्क करता है, बट until unless you go through security paradigm, security issues के regarding, you would not be able to know. Okay. The next thing is steps taken by the government. Write down steps taken by the government to curb terrorism. One is legislative, especially staying in Maharashtra. You might have heard of Makoka case, संजय दत्त. अभी कुछ ना कुछ रेफरेंस देना ही होता है, वरना लेजिस्लेटिव कुछ समझ में नहीं आएगा. मकोका केस, टाडा, टाडा के ऊपर उसको, लाइक टाडा और मकोका, आई डोंट नो, आई आई गेस टाडा के ऊपर उसको पनिशमेंट मिला था, मकोका के ऊपर नहीं, बिकॉज ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज क्राइम. ही वॉज detained, he was arrested under 3 4 sections of the different law. One is tada, कोटा, मकोका. those are all the case. अभी शायद 2 या 3 रिपील भी हो गए होंगे, but all the cases have not subsumed under UAPA. Okay, but we'll make sure that we'll go through those 2 repealed laws. One is of tada and one is of kota. Write down terrorist and disruptive activities
टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987. Next one is of POTA, Prevention of Terrorism Act. See, जल्दी जल्दी लिखना. I have to correct your answers also. Both the things have been repealed. Write down those and repealed because of overarching powers to Government of India. Overarching powers to the Government of India. Next one, 1987. कोटा का 2002. 2002 में बना, 2004 में तो रिपील भी हो गया था वो. टाडा रिपील हुआ 1995 में. 1987 में बना, 95 में रिपील हुआ. ओके. Next one, NIA Act, which is of still in the existing nature. NIA. See, these are the basic foundational acts. इसी का जो लूप होल्स है उसको सब निकाल के हम लोगों ने यूएपीए में रखा है. लेकिन जब 5149 हो जाता है, इट्स बेटर कि वी कॉल देम एज अ न्यू लॉ इटसेल्फ. अगर एक दो कहीं पे लूप होल है उसको हम लोग अमेंड कर देते हैं लॉ में. अगर बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं तो उस लॉ को रिपील करना इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट वन इज एनआईए एक्ट. Overarching powers to the government of India, which means कि 45 days में, जैसे 45 days is a maximum time a police officer can file charge sheet. And what if suppose in the case of Sanjay Dutt 45 days तक जेल हुआ, उसका रिजल्ट हम लोग देखते नहीं है कि लाइक ही वाज कन्विक्टेड. ओके, बट व्हाट इफ अ पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू बी convicted in that? Like we'll see in the challenges also, the success rate is 2.2% of NIA. Only 2.2, which means 100 लोगों को वो जो अरेस्ट कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 2.2 कन्विक्शन रेट है. विच मीन्स ओवर आर्चिंग पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज. इसी के लिए स्टेट जहां पे स्टेट में अलग पार्टी है और सेंट्रल में अलग पार्टी है, दिस पीपल टेल के सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी के बंदर आ गए. बिकॉज नाउ सी, इन 100 days बंगाल के इलेक्शंस हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस, और उसके 6 महीने से पहले सब एजेंसी पीछे लगी हुई है. विच मीन्स इंडिया के अंदर सिर्फ बंगाल में ही अभी कुछ ना कुछ करप्शन चल रहा होगा. बाकी के सब स्टेट विल बी ऑफ वेल ऑयल्ड फंक्शनिंग में होंगे. सो स्ट्रेंज राइट. इलेक्शन के 6 महीने पहले ही मतलब वहां पे कुछ ना कुछ करप्शन के एक्टिविटीज बिल्ड हो रहे होंगे. लेकिन बाकी आप स्टेट देखोगे, दे आर वेल वेल फंक्शनिंग इन स्टेट. महाराष्ट्र में एक भी करप्शन एक्टिविटी नहीं हो रहा होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी आया नहीं होगा. अगर आया होगा तो किसी दूसरे पार्टी के घर पे आया होगा, क्योंकि वो नेशनल पार्टी का होल्ड करता है. ही माइट बी ऑफ पॉसिबल थ्रेट इन अपकमिंग इलेक्शंस, वो हो सकता है. बट खुद के मतलब जो स्टेट सेंट्रल में है उस पार्टी का तो नहीं होगा फॉर श्योर.
अगर हुआ होगा भी तो आफ्टर 45 डेज आप भी भूल जाओगे, सरकार भी भूल जाएगी, क्योंकि 45 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करना होता है। इन डिफरेंट मतलब कोई दूसरे एक्ट में 90 डेज होगा, कुछ इसमें 180 डेज भी होगा, एनआईए में 90 डेज है, तो चार्जशीट उसके अंदर फाइल करना होता है। चार्जशीट विच मीन्स जिस दिन पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया कोर्ट में, उस दिन से ट्रायल चालू, विच मीन्स उस दिन से सुनवाई चालू। 90 डेज तक वो बस आरएनडी ही कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे। और 90 दिन मेरे को नहीं लगता कि चाहिए होगा। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी के लिए 90 डेज इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स इंक्लूडेड है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल स्टेट इंक्लूडेड है। व्हाट इफ एक मर्डर केस या रेप केस में कितना दिन चाहिए होगा? अगर आप, मेरे हिसाब से 10 दिन काफी है, 10-15 दिन। अगर आप यहाँ से कुछ फोरेंसिक निकाल के हैदराबाद भी भेजते हो, जहाँ पे नेशनल फोरेंसिक लेबोरेटरी है, हमारा कोरियर एक दिन में चला जाता है, तो सरकार का नहीं जाता होगा। सो दीज आर द लूप होल्स। जितना भी आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, और एक क्यूरियोसिटी बना के रखना कि जो भी करंट अफेयर्स न्यूज है उसको आप हॉलिस्टिकली पढ़ोगे, और हॉलिस्टिकली पढ़ोगे सो देयर माइट बी यू के जहां पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रोबेबल क्वेश्चंस इन इन अ प्रोबेबल टॉपिक्स। जहां पे एक मैंने एक्सपेक्ट किया था आफ्टर 2019 स्पेशली अब्रोगेशन ऑफ 370 एक्ट, राइट? 5 इयर्स 2019 में हुआ, तो 5 इयर्स कहाँ पे हुआ? 2024, 24 में आई वाज एक्सपेक्टिंग के रिगार्डिंग आर्टिकल 370 के बाद व्हाट आर द डेवलपमेंटल चेंजेस गवर्नमेंट हैज डन। उस लाइन पे नहीं आया, लेकिन 370 के ऊपर दूसरा सेक्शन के ऊपर से आया था। दैट्स हाउ लाइक यू विल बी प्रिडिक्टिंग योर करंट अफेयर्स का जो भी है, वो उस ईयर के लिए कैसे रिलेटेबल हो सकता है। लाइक देर आर लॉट मेनी न्यूज। जैसे 24 में एक न्यूज था नीति आयोग का कि 10 इयर्स हुआ, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद रानी दुर्गामती का 100 ईयर ऑफ क्रिमिशन, 1857, which means after 70-80 years, first war of Indian independence. So this is how you will be calculating your way of approach. Okay. The second one is NIA Act 2008. NIA, National Investigative Agency. National Investigative Agency. Apex Anti-Terror Agency. Write it in point wise. Apex Anti-Terror Agency. जहां पे भी क्वेश्चन आया, एनआईए ऐसा पूछेगा नहीं, आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई एनआईए, सीबीआई, आईबी प्रॉपर नेम लेके ही नहीं पूछेगा कभी। इट विल बी अ रैंडम स्टोन, एंड यू हैव टू पिक कि कौन से इसके ऊपर लिखना है। एंड आई वुड मेंशन कि हम कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम लेके मत लिखना, सेंट्रल एजेंसी अम्ब्रेला वर्ड लिख देना बेस्ट। बिकॉज वाइल राइटिंग आप जब टेस्ट लिखोगे आपको समझ में आएगा कि वेयर यू हैव टू करेक्ट योर वर्ड्स। ओके, फॉर इंट्रोडक्शन और फॉर योर क्लैरिफिकेशन, write down NIA Act 2008, an apex body for terror investigative things. Second one, aims to set the standards, aims to set the standards of excellence in counter-terrorism and other security-related investigation
at national level by developing highly trained, partnership oriented workforce. Second explanation to that and most important, ये सजेशन आप हर इसमें देखोगे. इफ यू आर रीडिंग सीबीआई, कौन से स्टैट्यूट से वो रूल करता है, कोई भी हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसको ऑन फोर्स लाया गया है तो कौन से स्टैट्यूट से लाया गया है, उसका बैकग्राउंड वर्क हमेशा करोगे आप. दैट इज अ बेसिक थिंग. एनआईए कैन इन्वेस्टिगेट, एनआईए कैन इन्वेस्टिगेट केसेस, एनआईए इन्वेस्टिगेट केसेस by taking powers from by taking powers from atomic energy act, atomic energy act 1962, UAPA act 1967, unlawful activities of prevention act. UAPA लिखो अभी as of now. See, after 2019, amendments were like this: overreaching of powers to the central government. Write down. Overreaching, overarching powers to the government by expanding the definition, by expanding the definition and activities like including activities like money laundering, counterfeit currency, prohibited items, explosive items, cyber security, cyber terrorism. Second point, this amendment gave an power, gave a power to Government of India to designate terrorist activities, terrorist activities, which is supposed to and likely to threat Indian security, which is planned outside India also. Enabled
to organize, enabled Government of India to organize session courts as special courts for NIA trials. It allowed NIA officers to seize, and confiscate property, search, seize, and confiscate properties which are linked to terrorist activities by bypassing the permission from the DGP of the state. Okay. Second one, UAPA, UPA, primarily an anti-terror law of India. Faces reveals that कितना notes लिख पाते हो सर, but ये आपको पढ़ने जाओगे तो कम से कम 400-500 पेज का कोई बुक खरीद के पढ़ोगे, एंड क्वेश्चन आएगा सिर्फ दो, कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। तो मेक श्योर थोड़ा बहुत स्टैटिक पढ़ लो, और करंट अफेयर्स के ऊपर से ही क्वेश्चन आता है। अगर बैकग्राउंड नहीं पता तो उसके बिना आप आंसर नहीं लिखोगे। या तो आप कोई सिक्योरिटी एजेंसी में वर्क करते होगे तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो, अगर नहीं करते होगे तो कहाँ से लिखोगे। तो मेक श्योर जो करंट अफेयर्स के एडिटोरियल्स आ रहे हैं उसको पढ़ो, और इसी नोट्स में उसको ऐड करते जाओ। ओके। अगर यहाँ पे नोट्स नहीं बना सकते तो घर पे जाके अपने सिक्योरिटी नोट्स बना लेना, ताकि जो स्टैटिक नोट्स हैं वो आपके पास इंटैक्ट रहें। ओके। An apex body for primarily an anti-terror law of India. Objective is to empower the states. Objective is to empower the states for dealing with activities for dealing with activities which are against unity, dignity, sovereignty, fraternity of India. ऑलमोस्ट ऑल सेम 2009 अमेंडमेंट का जो ये है, ऑलमोस्ट ऑल सेम है। राइट डाउन concerns regarding both the laws. Low conviction rate, low conviction rate, ब्रैकेट में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी स्टेट्स। उसको एक्सप्लेनेशन मत करो, जस्ट एक स्लैश मारो, राइट डाउन 2.2% conviction rate. Second, subjective interpretation of the definition of law.
subjective interpretation of the law, of the definition of law, violation of the principle of natural justice. नेचुरल जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे? पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ है? बोलोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा ये बाद में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे? हम्म, राइट। क्यों आया है यहाँ पे? बिकॉज एवरीवन आर ट्रीटेड फेयरली, नो बायसनेस। यहाँ पे बायसनेस हो सकता है, violates the principle of natural justice, law, due procedure of law, वो भी लिख सकते हो। लिखो violation of due process of law, due process of law। एग्जाम्पल, लाइक एग्जाम्पल नहीं, आपके लिए, as there is no judicial review for someone designating as terrorist, there will be no jurisdiction, like there will be no judicial review, you have to go through with this, 90 day रिमांड। 90 डे रिमांड नहीं बोला जाता, उसके बाद जो भी होगा वो रिमांड हो जाए, हो सकता है कि बाय टेकिंग परमिशन ऑफ द जज दे विल टेक अनदर 14 days, अनदर 15 days। वैसे करते करते 6 महीना हो जाएगा, 6 महीने में आप टूट जाओगे और आप बोलोगे इट्स बेटर टू गेट कॉल्ड एज टेररिस्ट। यस सर, मैं हूं। और आप बोलोगे एटलीस्ट टेररिस्ट बन के खाना पीना अच्छा मिल सकता है। देन यू विल बी ट्रीटेड, वंस यू आर कन्विक्टेड, देन यू विल बी ट्रीटेड एज वीआईपी, कन्विक्टेड पर्सन। वंस योर ट्रायल इज ऑन, आपको सबके साथ सोना होगा। द सीन इज लाइक दिस, अगर आप किसी केस में फंसे हो, टिल द चार्जेस आर प्रूवन, आप एक कॉमन हॉल में सोओगे। दिस इज फॉर कॉमन फॉर एवरीवन, फॉर कॉमेडियंस, फॉर कोई स्टार के एक्टर हो, स्टार के बच्चे हो, सब लोग को एक ही इसमें सोना होगा। और एक हॉल में शायद समझ लो 100-150 लोग सोते होंगे शायद इस हॉल में। मैं गया नहीं हूँ। इस हॉल में शायद 75-100 पीपल भी सो सकते हैं, इतना क्लोज स्पेस। एंड वंस यू आर कन्विक्टेड बेस्ड अपॉन योर respect in the society, rank in the society, you will be given a so called proper treatment, जहाँ पे आपको शायद सेपरेट सेल में रखा जा सकता है, टीवी दिया जा सकता है, फ्रिज दिया जा सकता है। बट वंस यू आर कन्विक्टेड लेटर देन, इसके बीच में भी हो सकता है, एज वी आर इन इंडिया देयर आर फ्यू लूप होल्स, जहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरा से ये बंदा मसाज करते हुए दिखा, दिल्ली के मिनिस्टर को, मनीष सिसोदिया को। देखना कभी हाउ इट वर्क्स, हाउ एन इकोनॉमी ऑफ अ जेल वर्क्स। पुलिस का सबसे ज्यादा पैसा इन जेल इसमें होता है, नॉट बाई मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एक शायद 1:100। अगर बाहर का पुलिस 100 रुपया कमा रहा होगा एक दिन का, तो जेल का एक आदमी या जेलर एक दिन का कम से कम 10 लाख के ऊपर कमा रहा होगा। 10 लाख भी, वो इडली का चटनी बोल रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि कितने लोग होंगे, 1:3 रेट हो जाता है। आपको कुछ भी चाहिए बाहर से, 1:3 रेशियो। कुछ भी चाहिए ना, ही मेरे कोई रिलेटिव या मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे, इट्स जस्ट एक एडिटोरियल आया था, उसके उसके अंदर लिखा था कि 1:3 रेशियो में बिकता है। कर्नाटका में देयर वाज एन इश्यू रिगार्डिंग, जो दर्शन एज ए सुपरस्टार है, ही इज बीन टेकन इनटू कस्टडी फॉर मर्डर केस। तो इट्स ऑलमोस्ट कि मतलब उसको कन्विक्शन मिलेगा ही,
लेकिन अंदर एक सीसीटीवी कैमरा या किसी ने फोटो लेते हुए पकड़ लिया उसको, सिगरेट और दारू पीते हुए, और वो बाहर आया। सस्पेंड हुआ जेलर, और जो जेलर के मतलब सबऑर्डिनेट्स होते हैं सबको ट्रांसफर किया गया। दैट्स व्हेन प्रेजेंट रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स वाज इन वेरी वेरी मच इन न्यूज। तब आया था कि 1:3 रेशियो में, like people sell this, like if suppose you want biryani, yes sir provided, बाहर का 200 है तो आपको 600 रुपया पे करना होगा, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन 1:3 रेशियो में, वन फॉर द परचेजिंग थिंग, वन फॉर द पर्सन who will be like subordinates, and one part will be for the jailer, not biryani पैसा। वो तो बाहर ही है, वो तो इससे अच्छा कुछ बिरयानी खा सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन सेकंड वन। कहाँ पे थे हम लोग? लो कन्विक्शन रेट, ओके। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म? इंडिया इज ए यूनिटरी और फेडरलिज्म? इंडिया इज ए यूनिटरी कंट्री और अ फेडरल कंट्री? क्वाजी फेडरल, यही टर्म आपको प्री में पूछा जाएगा। व्हाट डज इंडिया फॉलो? यूनिटरी फेडरल स्ट्रक्चर। बेस्ट एग्जांपल फॉर यूनिटरी, बेस्ट एग्जांपल फॉर यूनिटरी, सॉरी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। बेस्ट, द बेस्ट एग्जांपल वुड बी यूएस। राइट डाउन वायलेशन ऑफ, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। एग्जाम्पल में आप ये लिखोगे, परमिशन ऑफ डीजीपी टू डीजी ऑफ एनआईए। पहले डीजीपी, डायरेक्टर इन जनरल ऑफ पुलिस को पूछना पड़ता था ऑफ द स्टेट, नाउ दे विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू डायरेक्टर ऑफ जनरल इन ऑफ एनआईए। जल्दी लिखोगे, 15-20 मिनट ही लगेगा। कोई भी हाँ नहीं बोला, लिख लो, 10-15 मिनट, कुछ नहीं होता। टेक डाउन इंस्टीट्यूशनल, नहीं, नेक्स्ट हेडिंग, इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स, जैसे नेट ग्रिड। राइट डाउन नेट ग्रिड, लाइक वी अडॉप्टेड दिस। एक्सप्लेनेशन घर पे जाके लिखना, सुन लेना, ठीक है? हाँ। आफ्टर 2000, 26/11 अटैक, वी अडॉप्टेड दिस। आपने मूवीज में देखा होगा, एक बंदा कहीं बाहर गया है, अपने सर को फोन करता है, सर मेरे को इसका डेटा चाहिए, तो उसका डेटा पूरा मिल जाता है। वो कहाँ गया, कौन से बैंक अकाउंट में उसका अकाउंट है, कितना ट्रांजैक्शन किया, उसका स्कूलिंग का कहाँ हुआ, उसका कॉलेज कहाँ हुआ, एवरी डेटा, इवन विथ योर बैंक डिटेल्स, योर मोबाइल डिटेल्स। आपका मोबाइल भी सेफ नहीं है। इवन व्हाट सो कॉल्ड एज आईफोन, पेगासस सॉफ्टवेयर वाज लॉन्च्ड टू हाईजैक दैट। इवन योर आईफोन इज नॉट सेफ। आपका कोई डेटा सेफ है ही नहीं। और हमेशा डेटा ऑनलाइन कोई क्लाउड में छुपा के मत रखना, ठीक है? कहीं छुपा लेके, कोई ईट जो ओल्ड स्कूल मेथड है उसी में रखना, ताकि दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट। अगर कुछ रिवील भी होगा या बिगड़ेगा, तो नेचुरल प्रोसेस से वेदरिंग हो जाएगा वो। यहाँ पे कोई डेटा सेफ नहीं है इन द मॉडर्न ग्लोबल 21st century era. There is nothing of your data is safe, not even your government is protecting that. Have you heard of DigiLocker also? What if your DigiLocker is misused by government itself? One example, National Health Mission, heard of it? 16 या 14 डिजिट कोड है,
विच मीन्स आपका हर एक हेल्थ बैकग्राउंड थिंग वुड बी रजिस्टर्ड देयर। आप कौन से डॉक्टर के पास गए, आपको कौन से एलर्जीज है, आपका शुगर कैसा है, every time you will go to doctor, your doctor would you know will be accessible to your records, अगर आपने उसमें लॉग इन या साइन अप किया तो। इज इट गुड और बैड? गुड तो होगा ही, क्योंकि यू डोंट नीड टू कैरी योर होल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। आप कहीं पे भी जाओगे, अपना आईडी दोगे, एवरीथिंग वुड बी सीन अप। बट व्हाट इफ दैट डेटा इज बीन थेफ्ट बाय समवन एल्स? आपको है कैंसर, वहां पे एड्स लिख दिया किसी ने तो माइट बी पॉसिबल। जैसे एआई फेक का जमाना है, डॉक्यूमेंट फेक नहीं हो सकता। आप जब तक पूरे मोहल्ले को बताओगे मेरा एड्स नहीं है, मेरे को मेरा खून का तलाशी ले लो, तब तक तो घर पे बच भी गए होंगे आपको। तो मेक श्योर दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट यू कैन राइट, नॉट दिस एग्जाम्पल। अगर नहीं होता तो आप खुद सोचो, उस टाइम पे यू हैव हार्डली 7 to 8 minutes फॉर राइटिंग 10 मार्कर आंसर। उसी टाइम पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपको सोचना होगा, अगर नहीं आ रहा है एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड वन इज ऑफ मैथ। इसका एक्सप्लेनेशन लिख लोगे या लिखाऊं? नहीं लिखाऊं? ठीक है, आप घर पे जाके लिख लेना। सेकंड, राइट डाउन मैक, मल्टी एजेंसी सेंटर, नोडल एजेंसी फॉर द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन द पुलिस थिंग। जैसे सर्ट इन करके एक है, हैव यू हर्ड ऑफ इट? सर्ट इन, दिस इज इवन फॉर द इंटरनेशनल फोरम्स ऑल्सो, इंटरपोल, सीबीआई, जो भी सेंट्रल एजेंसी है, और जितने भी बाहर की पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, उनको इंफॉर्मेशन ऑन रियल टाइम बेसिस। जैसे इफ सपोज एनी एक्टिविटी, अगर वन रियल एग्जांपल इज ऑफ पुजारी, हु इज दैट पुजारी जो टेररिस्ट था फ्रॉम कर्नाटका, दाऊद का राइट हैंड, नेम कॉल्ड पुजारी, जाके गूगल कर लेना, आई एम अनेबल टू, छोटा राजन, हिज ओरिजिनल नेम इज सम पुजारी, ही इज फ्रॉम मैंगलोर। ओके, तो उसको पकड़ा गया था विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल, एंड दैट मैसेज वाज गिवन बाय द सर्टिन। ओके, सर्टिन वहां के पहले तो इंटरपोल को भेजा, इंटरपोल मॉरिशस, वहां के इसको भेजा, दे बोथ कोऑर्डिनेटेड एंड देन दे अरेस्टेड। ओके, राइट डाउन द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट, नॉट थर्ड पॉइंट। जैसे लेजिस्लेटिव देखा, इंस्टीट्यूशनल देखा, द थर्ड वन इज बॉर्डर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट टू फेंस porous borders, government to fence porous borders in order to curtail terrorist infiltration. CIBMS, CIBMS, उसका एब्रीवेशन लिखना, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसके अंदर 5 लेयर्स है, वो 5 लेयर्स आप लिखोगे, गूगल इट, मेक श्योर। बस छोड़ो यहां से, ये तो बंदा लेट हो रहा है तो निकल जाओ। 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम्स है, जिसमें अंडर यू लाइक यू गूगल इट, रिसर्च, एंड उसमें लिखना कौन से 5 लेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन,
Stop funding. TFFC of India. TFFC, terror funding and fake currency, which is under NIA. FICN, fake Indian currency notes, which is under Ministry of Home Affairs. Cyber security, next one. Next heading, cyber security. NCIIPC. NCIIPC, इसका फुल फॉर्म भी आप ही लिखना. नेक्स्ट वन NCCI. नेक्स्ट हेडिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. प्रोग्राम कॉल्ड उड़ान. प्रोग्राम कॉल्ड उड़ान. हिमायत. प्रोग्राम्स अंडर हिमायत. प्रोग्राम्स अंडर ADP, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग. जो लास्ट प्रोग्राम बोला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग. मेक श्योर यू हैव अ थोरो नोट्स ऑन दिस, क्योंकि प्लानिंग कमीशन रहा नहीं है. इफ देर इज एनी थिंक टैंक बॉडी और सजेस्टिंग बॉडी, दैट इज ऑफ नीति आयोग, एंड दे हैव कम अप विद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, देयर आर लॉट मेनी सेक्टर्स. मेक श्योर उससे भी थोड़ा बहुत सजेशंस आप अपने इन योर आंसर्स यू कैन कीप इट. ओके, एटलीस्ट अभी आंसर दिखा सकते हो. कंक्लूजन. ओके, दिस इज एन एब्सोल्यूट सेंटेंस. पुलिस तब तक ही जिंदा है तब तक चोर है. 100% इरेडिकेट नहीं कर सकते कोई भी प्रॉब्लम को. थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लेते, व्हाट इज नक्सलिज्म. कंक्लूजन. सब समाधान ही लिखा है आपने. What is the mindset behind not writing answers?
comfortable in Marathi, तो मराठी में लिख दे. मेरा लेक्चरिंग कुछ आपको मोटिवेट कर रहा है नक्सलिज्म करने के लिए, ये मत लिखना है इसमें, मेरे को पकड़ के जाएंगे वरना. इसमें तो लिखेगा एटलीस्ट इंट्रोडक्शन. कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, बॉडी अच्छा लिखा है. आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, बॉडी अच्छा नहीं. इस उस पैराडाइम में लिखा. What is the mindset they are not like? See, this is a major thing that you have to look upon. जितना आपने पैसा यहाँ पे किया है, उतना पैसा सिर्फ टेस्ट सीरीज का दो. Make sure when they have given you for something free, फोकट का माल का वैल्यू कभी नहीं होता मार्केट में. और आपने मेरे को सिखा दिया. Make sure कि उसको आप यूटिलाइज करो, वरना इतना ही पैसा सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए करो. बाकी make sure you watch another movie, Article 370. We'll discuss militancy in the next class. You would be able to relate what is militancy, what are the challenges, and if possible, go to that fair, Vasudeva Kutumbakam Pure. That's one of the nicely exhibited exhibition there. वहाँ पे if you are practicing law, if you are into PSI or optional,